Hello everyone, myself Archana Palandurkar. I am professor in Kamala Nehru College for the subject of environmental education and water security. And again I am here with the new video of new chapter. As you know, we are completed the 2 chapters of 11th standard. This is our 3rd chapter, that is biodiversity. इसके पहले वाला इकोसिस्टम था एंड नेक्स्ट वन इज द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज एन वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक because when we are living in this ecosystem, we always observe the variety of biodiversity surrounded to us, and we are always beneficial from those biodiversity or agents of biodiversity. तो थोड़ा सा सुना हुआ भी है, पढ़ा हुआ भी है, तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है. तो मैं एक इंट्रोडक्टरी ये वीडियो होगा. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड आफ्टर दैट लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. उतना ही खत्म करूंगी, उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. So first of all, we should be clear about the biodiversity. What is the meaning of biodiversity? The name itself suggests biodiversity. दो word है. Biological diversity. Diversity means variation. Variation of species. That is diversity. Diversity का मतलब होता है बहुत सारी variety, बहुत सारे choices. That is diversity. So biological diversity is biodiversity. Now what is biological diversity? Several kinds of ants are running on the floor. That is biodiversity. When we are going to the market, we found several kinds of rice varieties are available in the shop or market. इट इज बायोडाइवर्सिटी. हम बायोडाइवर्सिटी और कहाँ देख सकते हैं? इवनिंग में बाहर बैठे हैं तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो ऐसी एक भी जगह नहीं है जहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी से घिरे हुए नहीं है. जहाँ पे भी जाएंगे वहां पे हमें बायोडाइवर्सिटी मिलेगी. हमारे घर में भी हम ऐसे लगता है कि दिस इज माई हाउस, बट इट इज नॉट ओनली योर हाउस. सेवरल काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी और several kinds of animals is surviving in your home. आपको मॉस्किटोज दिखेंगे, आपको आंट्स दिखेंगे, आपको different kinds of birds दिखेंगे, आपको different types of insects are there in our houses. So all those are the examples of biodiversity. तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे स्पेस छोड़ के जहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी नहीं मिली. तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा. ऐसी बहुत सारी स्पीसीज हैं. दोज आर अननोन स्पीसीज. मीन्स 50% अभी हम बोल सकते हैं ओनली 50% स्पीसीज आर नोन स्पीसीज ऑन द अर्थ एंड रिमेनिंग 50% आर अनडिस्कवर्ड. अभी तक किसी ने उनको ढूंढा नहीं है या उनको नाम नहीं है या पता नहीं है. सेवरल स्पीसीज आर अनडिस्कवर्ड स्पीसीज. सो ह्यूमन बीइंग इज नॉट ओनली द वन क्लाइमैक्स स्पीसीज ऑन द अर्थ. लॉट्स ऑफ स्पीसीज आर सराउंडेड to the human being to influence the life of human being, to enrich the life of human being, है ना. जैसे मैंने अभी राइस का आपको एग्जांपल दिया था, तो ये चॉइस क्यों मिली हमको? वैरायटी ऑफ राइसेस आर अवेलेबल इन द मार्केट. दैट चॉइस because we have choice because of the biodiversity. तो इससे हमारा लाइफ जो है वो फ्लरिश होता है एंड इम्प्रूव, लाइफस्टाइल इम्प्रूव होता है. इट हेल्प्स अस. ये तो सिर्फ राइस का एग्जांपल था. Another thing, firewood from the biodiversity. We got medicine from the biodiversity. We got honey from the biodiversity. Several kinds of flowers are there, plants are there, and we got the respiratory oxygen from the biodiversity, and clothes from the biodiversity. Varieties of cotton fields are there, and that's why we have varieties of clothes related to the cotton. We have the silk fabric because of the biodiversity. We have woolen because of the biodiversity, and several kind of benefit we got from the biodiversity. But nowadays this biodiversity is in the threat because of the human interference, because now we are greedy as compared to the previous ancients. We are greedy for the each and everything. I want a
lavish furniture in my house. I want my cupboard full of with the dresses and sarees and all those things. I want variety of food in my plate. किसी शादी में फंक्शन में जाइए 100-150 टाइप के आइटम्स होते हैं. तो when we are greedy utilizing our natural resources, it means it is ultimately related to the decrease in biodiversity or harm to the biodiversity. जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना उसका एक्सेसिव यूज होगा and it threats to the biodiversity. So to protect the biodiversity in future days, in present day, we should go through the biodiversity study and we should know the value of biodiversity. आप सिर्फ सोच के देखिए कि कुछ दिनों बाद पता चला हमको कि कोई एक प्लांट या एनिमल ऐसा है जो हमने सालों से देखा हुआ है, वो एक्सटिंक्ट हो गया, उसको हम देख ही नहीं रहे हैं. For example, always I give an example of different kinds of fruits. इसलिए क्योंकि in my childhood I was found different kinds of food. For example, berries are there, different kinds of berries, blackberries, छोटे छोटे blackberries होते थे. Then the फॉरेस्ट बेरीज आर देयर. तो ये सारी चीजें अभी ये मार्केट में हमने नहीं देखा. नाउ वी हैव द ग्रीन एप्पल, नाउ वी हैव द पियर, नाउ वी हैव द कीवी एंड ऑल दोज थिंग्स. दोज आर नॉट द पार्ट ऑफ आवर बायोडाइवर्सिटी. ये हमने बाहर से मंगाया हुआ है एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए या उसकी वो एक हम बोल सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ लैविश लाइफ. सो वी ब्रॉट ऑल दोज फ्रूट्स. बट कहीं तो भी हमारे जो बेसिक थे बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे प्लेस से रिलेटेड करते थे, हमारे क्या बोलते उसको रूट थे हमारे इकोसिस्टम के या हमारे पर्टिकुलर हैबिटेट के, वो हमने कहीं ना कहीं खो दिए हैं. बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मैंने कई सालों से मार्केट में नहीं देखे जो मैंने अपने चाइल्डहुड में देखे थे. तो ऐसी चीजें जब आपको पता चले कि कोई आपकी फेवरेट सब्जी है आप जो आप 10-15 सालों से खा रहे हो और पता चला कि बाद में वो मिलती ही नहीं है कहीं पे, तो ऐसे दिन आने वाले हैं फ्यूचर में और आएंगे बिकॉज ऑफ द एक्सटेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंटेंट. बहुत सारी चीजें नाउ वी हैव थ्रू आउट द ईयर कॉलीफ्लावर, बहुत बड़ी फ्लावर आपको मिलती है. दैट इज एंड इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द जीनोम बेसिकली. तो साल भर कुछ फ्रूट्स मिलते हैं. तो दोज आर नॉट द पार्ट ऑफ नेचुरल बायोडाइवर्सिटी और इट इज नॉट द पार्ट ऑफ नेचुरल बायोडाइवर्सिटी कंटेंट. ओके, सो दिस इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. ये थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी हम और पढ़ने वाले हैं, रिलेटेड एक कंटेंट है हमारे टेक्स्ट बुक में. सो दिस इज अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी क्या है वो समझना जरूरी है. आफ्टर दैट द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. लेवल्स मीन्स लेवल्स को हम टाइप्स भी बोल सकते हैं. लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. फर्स्ट वन इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी. एज आई गिव इन द एग्जांपल ऑफ राइस प्रीवियसली, different kinds of rice is available in the market because of the basically आप सोचिए कि नेचर ने बनाते वक्त एक या दो टाइप का ऐसा मोटा सा राइस बनाया था, बट वी हैव सेवरल इन्वेंशन ऑन इट. वी transfer the genome of that particular species and different kind of species are formed. ठीक है, तो राइस का एग्जाम्पल इज वेरी कॉमन. वीट, एग्जाम्पल ऑफ वीट, वेराइटी ऑफ वीट स्पीसीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. इवन द बीन्स, वेराइटी ऑफ बीन्स आर अवेलेबल इन द मार्केट. तो ये चीजें हैं. दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. मीन्स उनका बेसिक क्या है, इट इज एन राइस. वो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों बोले, बिकॉज डिफरेंट राइस हैज अ डिफरेंट टेक्सचर, डिफरेंट कलर, स्लाइटली डिफरेंस इन द कलर, दे हैव द डिफरेंस इन साइज एंड इवन दे हैव डिफरेंस इन टेस्ट ऑल्सो. दैट्स वाई वी ऑलवेज चूज द बेस्ट राइस फॉर अस, है ना. तो इसीलिए हम अलग अलग टाइप के लाते हैं क्योंकि टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है. सो they give and different aroma, different taste. So this is in genetic diversity क्योंकि जीन्स में हमने किया है. फॉर एग्जाम्पल बीटी कॉटन आपको पता होगा. बीटी कॉटन इज एन जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीसीज. जेनेटिकली मॉडिफाइड मीन्स उसके ऊपर एक इंसेक्ट जो है या हम उसको बोलेंगे डिसीज ज्यादा होते थे जो प्रीवियस कॉटन सीड्स है. दे आर इन्फेक्टेड बाय द सेवरल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स और सेवरल टाइप ऑफ डिसीजेस. सो हियर इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड, रेजिस्टेंट टू दैट
diseases. तो ये genetically modified BT cotton is available now in the market, so it is an genetically modified. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. Even in animals also the cows are genetically modified. जो हमारी पहले ancient गाय होती थी या कुछ सालों पहले, तो उनको milk production is less as compared to the genetically modified cows. तो genetically modified किया हुआ है, जीन्स के साथ छेड़छाड़ करके किया, जीन्स को ऐड करके जो है genetically modified species बनाई जाती है. तो दिस इज जेनेटिक डाइवर्सिटी अमॉन्ग्स द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज. बहुत सारे स्पीसीज में आपको मिलेगा. इवन इन द फिशेस ऑल्सो जेनेटिकली मॉडिफाइड फिशेस, कल्चर फिशेज जिसको बोलते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल होती है खाने के लिए एज ए फूड, दोज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड. After that, the species diversity. Species diversity means different species. Look at the look at the figure. You will identify the species diversity. One farmer is there. After that, the cattle are there, the microorganisms are there, plants are there, birds are there. Means everything is included in the species diversity. Species diversity means diversity in a particular habitat. ठीक है? Particular habitat means, for example, in a village or in a agricultural field or in a species diversity के लिए single tree can also be an example of species diversity, because that tree is a single species and several kinds of insects and birds survive on that tree are the species diversity. मतलब एक particular जगह में बहुत सारे प्रकार के species जब होते हैं, variety of species, उसको हम बोलते हैं species diversity. Okay. After that, third one is the ecological diversity, ecosystem diversity, sorry. So ecosystem हम previous lectures में पढ़ चुके. Ecosystem diversity means different kinds of ecosystem. Pond as an ecosystem, then the forest as an ecosystem, then terrestrial, grassland, desert, ocean, river, several kinds of ecosystems are there. So ecosystem diversity means each and every ecosystem has a different species of biodiversity. For example, when we compare two aquatic ecosystem, river as well as pond, तो दोनों में आपको स्पीसीज जो है वो अलग अलग मिलेगी, तो उसको हम इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं. इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोलते हैं क्योंकि वो अलग अलग इकोसिस्टम है. रिवर इज एन फ्लोइंग वाटर, तो उसमें फिशेस जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेस आर देयर. पॉन्ड इज एन स्टेबलाइज और स्टेबल इकोसिस्टम, स्टेगनेंट वाटर, सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीसीज आर देयर. प्लांट स्पीसीज और एनिमल स्पीसीज, फाइटोप्लैंक्टन, zooplankton are there. In the river ecosystem you will find out the less number of phytoplanktons and zooplanktons and more fishes, and big fishes are less as compared to the pond and as compared to the ocean. So different types of ecosystem diversity is there. This is all about the today's video. Like the video, please subscribe the channel and share the video, comment on the lecture, and if you have any doubt you can ask to me. Comment करते रहिए, it will helpful for the improving my lectures and communicate amongst us. So this is all about today's lecture. Thank you for watching the lecture. Keep watching.